Hello, it's Standard. So let's start today's chemistry class. So as you know, we are discussing uh, chapter 8, chapter 5, sorry, chapter 5, coal and petroleum. And students, we are going to discuss today about petroleum. So we are discussing about petroleum in this class. And student, first let's start. Let's discuss its content. So student, in this chapter, we have already discussed about inexhaustible resources, exhaustible resources, and story of coal. And student, we have already discussed about coal tar, coal gas. So today we are going to discuss refining of petroleum. As you know that petroleum is a combined term for the diesel, kerosene, paraffin, wax, etc. Petroleum is another exhaustible resources. Next one that the coal. So student, let's start. So students first start the discuss with the petroleum. Student petrol और डीजल. पेट्रोल जो हम यूज करते हैं वो हम लाइट वेट व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं, लाइक मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, एक्सेट्रा. और जो हम डीजल यूज करते हैं वी आर यूजिंग डीजल फॉर द हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर, एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, जो पेट्रोलियम वर्ड होता है, जैसे हमने आपको पहले डिस्कस किया था, ये हमारे दो टर्म से बनता है, पेट्रा एंड ऑयल. पेट्रोलियम इज अ क्रूड ऑयल एंड इट इज आल्सो अ नेचुरल रिसोर्सेज. ये दोनों हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. लाइक कोल, पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, exhaustible natural resources. Petroleum, it contains petroleum gas, petrol, naphtha, kerosene, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, fuel, bitumen. Petroleum is nothing. It is having a unpleasant smell and dark oily liquid. ये बहुत अलग तरीके की इसकी स्मेल होती है और इसका जो कलर होता है वो काफी गाढ़ा और ये ऑयल लिक्विड जैसा होता है, क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं. स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग दीज कंपोनेंट्स, अगर हम इसको डायरेक्टली यूज ना करें, अगर हम इन सारे कंपोनेंट्स को अलग करना चाहें तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग. दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज refining, the process of separating diesel different components of the petroleum. So before going to use petroleum, so we have to separate it. It must be separated by the process of refining. Refining can be carried out in petroleum refinery industries. Okay, so petroleum refining can be done by this process known as fractional distillation. Student, the fractional distillation work on the boiling point. It depends upon the boiling point. So the method of separating component based on difference is boiling point, that is a fractional distillation. तो fractional distillation जो work करता है वो boiling point पे work करता है. जैसे आपको पहले बताया कि पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. It contains petroleum gas, it contains petrol, it contains naphtha, kerosene, diesel, paraffin, wax. तो हमें इनके बॉइलिंग पॉइंट पता होने चाहिए. विदाउट बॉइलिंग पॉइंट हम फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज नहीं कर सकते. फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए. स्टूडेंट, फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, दैट इज अ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इट विल बी कनेक्टेड एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन फ्लास्क, एंड द सेकंड वन विल बी स्टोर एट द सेकंड स्टेट, थर्ड विल बी स्टोर एट द थर्ड स्टेट, फोर्थ विल बी स्टोर एट द फोर्थ स्टेट. तो इस तरीके से हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्क करता है. इट होल वर्क इज डिपेंड अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट. जिसका इन सारे उस सेपरेशन में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे टॉप पे आ जाएगा, जिसका सबसे हाई होगा वो सबसे नीचे रहेगा. और जिनका सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, वो उसको सेपरेट करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, but it can be used to refining the petroleum. So the solution, the mixture, the components which has the lowest boiling point, it will be collected at the top of the fractional distillation column. And as you know, fractional distillation and the petroleum can be used as a fuel at automobiles, good solvents,
जैसे पेट्रोल है हमारा कहाँ का यूज, पेट्रोलियम गैस हमारी कहाँ का यूज होती है, इट इज यूज इन एलपीजी, हमारे घरों में, कुछ इंडस्ट्रीज में यूज होती है। पेट्रोल हमारा व्हीकल्स में, एज पेट्रोल इज ऑल्सो गुड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपको पता है, जो सॉल्वेंट होता है एक सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट होता है और सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी एंड सोल्यूट इज प्रेजेंट इन अ लोअर क्वांटिटी, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, क्योंकि ये भी अपने अंदर काफी चीजों को डिसॉल्व कर सकता है। Kerosene is used into burn stove, lamp, and jet aircraft. Diesel can be used for the heavy vehicles and machines. Lubricating oil is used for the machinery parts to avoid friction. Bitumen is used for making paints and road surfaces. So students, I hope you all have understood this point. So let's discuss its अब आप इस वीडियो को देखिए। सो आई होप ये आपको वीडियो काफी अच्छे समझ में आए। Good morning, children. Today we shall learn about petroleum and its usage. Like coal, petroleum is also a fossil fuel, which means it is formed from the remains of dead organisms. But it is liquid, and the process of its formation was much different from the formation of coal. Petroleum was formed from the remains of sea creatures. As they died, their bodies settled at the bottom of sea or ocean and gradually got covered by sand, clay, etc. Over millions of years, absence of air, high temperature, high pressure transformed the dead organisms into and natural gas. All of us know how important petrol, diesel, etc. are. We get fuel from petroleum. We also get kerosene from petroleum. Petroleum needs to be refined in the refineries to get these fuels. Raw petroleum or crude oil is a dark, oily liquid with an unpleasant smell. It is extracted from Earth's crust through a deep oil well. A huge pump extracts the petroleum through this deep oil well. Petroleum is a complex mixture. Petroleum refining means separating its components, and it is carried out at petroleum refineries. This separation process is known as fractional distillation. This process is actually for separating chemical components by their boiling point. Mixture is heated to a temperature at which one or more fractions of the compound will vaporize. Look, different components vaporize at different temperature and thus get separated. So we get lots of things from petroleum. We get fuels like petrol, kerosene, diesel, LPG, etc. We get lubricating oil. Paraffin fats, which we get from the residue of the refining process, is used for making ointments, candles, petroleum jelly, pastry, wax, etc. Bitumen, which is also obtained from residue of fractional distillation process, is used for making paint and building roads. Every component of petroleum has some heat, hence it is often called black gold. Natural gas is a very important fuel because it is easy to transport through the pipes. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas, in short CNG. CNG is used for generating power as fuel for cars. CNG is less polluting than petrol, diesel, etc. But coal, petroleum, natural gas, etc. aren't available in unlimited quantity. With heavy use of these, we will run out of these resources in not so distant future.
future. So these are exhaustible natural resources. Hence, we have turned to resources which are available in unlimited quantity for fuel, electricity production, etc. Sunlight, air are such inexhaustible natural resources. Solar energy is now best used for generating electricity for home, industry, etc. Also for cooking. In not so distant future, solar energy could also be used to run cars. So now you know about petroleum and its usage. To sum up, petroleum is a fossil fuel. Petroleum was formed from the dead remains of sea animals billions of years ago. Petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, lubricating oil are obtained by refining petroleum. Like coal, petroleum is an exhaustible natural resource, which means only a limited supply is available. Hence, we should use it judiciously. That's all for now. Bye bye, children. So students, what we have discussed natural gas, petroleum, coal. Three of them are exhaustible resources and they are present in limited. So students, we should conserve them for our future generation. So thank you so much students. I hope you all have understood this point very clearly. Thank you.